paper 4. So you have to attempt one question from section A and one from B. B are the scenario based ones, and these ones, the upper ones are, these are for the essay question that you have to attempt. Now we are going to solve them. So first of all, when we, all right, it is recording. So you have these question, and the most common question that we have is on Rylance versus Fletcher. We have these questions. First one is describe and evaluate the elements which must be present to establish the liability for negligence misstatement. Describe the elements of tort of Rylance versus Fletcher and assess the extent to which it is a sort of strict liability. The next is the defense of voluntary non-fit injuria, which is consent, will not apply merely because a claimant has knowledge of existence of a risk. Describe the elements of this defense and assess the extent to which the statement above is true. So आप लोगों ने इसमें से वन क्वेश्चन करना है जो कि हम इस वक्त करने लगे हैं. Describe the elements of tort and Rylance versus Fletcher and assess the extent to which it is a tort of strict liability. एक दफा आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने पेपर 4 के क्वेश्चंस को किस तरह करना है, then you can attempt these two as well, just like that, with the difference of information in it. So now that you have started the, so first of all, we need to understand that what does the question require from us, and the question requires us to describe the element of tort of Rylance versus Fletcher, and then you have to assess to the extent to which it is a tort of strict liability. Means कि आपने इसको prove करना है with advantages and disadvantages. You either approve it or either you disapprove it कि ये एक strict liability का offense है या नहीं. Right? Tort of strict liability होना इसका जरूरी है या नहीं. So सबसे पहले जब आप लोगों ने अपना आंसर लिखना शुरू करना है, तो you guys first of all need to know all the necessary information that you are required. So first of all, what you have to do is you have to write down the essential elements of tort. So you have to mention all the essential elements of the tort in Rylance versus Fletcher. And you also have to do one thing, and that is कि आप लोगों ने, you have to give the explanation of each element. अब वो elements क्या है Rylance versus Fletcher के, वो आपने अपने सिलेबस में, लेक्चर में, रीडिंग्स में पढ़ा होगा कि इसके 4 एलिमेंट्स हैं. मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है. फर्स्ट इज द ब्रिंगिंग ऑफ समथिंग ऑन टू द लैंड. सेकेंड इज द थिंग इज लाइकली टू डू मिसचीफ if it escapes. Third is non-natural use of land. Fourth is an escape. ये 4 elements आपने mention करने हैं, and not only that, you have to explain each of them. और उसके साथ आपने relevant case laws को support करना है. फिर जब आप अपना आंसर लिखेंगे, आपने origin mention करना है कि Rylance versus Fletcher जो है उसका रूल कहाँ से आया. तो आप वो बताएंगे it was established at the time when increased industrialization caused damages. और damages तब क्या हो रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन से, जो एकदम से इंक्रीज हुई थी 18th सेंचुरी में. नेमली 1868 में क्या हुआ था कि there were fires, floods, escapes of fumes, right? And it was a strict liability tort. किस वजह से था? To ensure social
injustice. सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए था और इनजस्टिस को निगेट करने के लिए था. सो दिस इज नॉट अ लेक्चर कि मैं आपको इसके ऊपर पढ़ाना शुरू कर दूं कि व्हाट इज द होल सब्जेक्ट. आई हैव टू डिस्कस द रेलेवेंट थिंग्स दैट यू पीपल नीड टू राइट. उसके बाद आपने फैक्ट्स बताने हैं केस के, और वो क्या है? फैक्ट्स यही है कि जो डिफेंडेंट था who was a mill owner and he had paid independent contractors, और उसने कहा था कि एक रेजर्वॉयर बनाना है लैंड के ऊपर, और उस रेजर्वॉयर से they had to supply the water to the mill, right? And then after that जो contractors थे, they could have blocked up the shafts but they did not. So जब reservoir fill हुआ तो water जो था it burst through the shafts and flooded, जिसकी वजह से claimant का damage क्या हो गया था? 937 pounds का damage हो गया था defendant के reservoir की वजह से. After that, so basically long story short, you have to write down all the facts, और उसके बाद you have to say कि defendant was negligent as he did not know about the shafts and he could not be like liable. So उसके बाद ये हुआ था कि there could be, जो judges ने कहा था कि there could be no claim on trespass, कि trespass पे तो ये हो ही नहीं सकता. And decision was कि defendant was still liable in tort, right? So these are the facts that you have to mention, और उसके बाद आपने relevant case laws mention करने हैं, जो judgment भी बता देनी है आपने, ठीक है? और उसके बाद आपने ये भी बता देना है कि जो ये इस केस में जो tort था वो कौन सी 5 चीजें जो थी वो सक्सेसफुल हुई थी. वो ये हुई थी कि जो आपने पढ़ी होंगी पहले भी कि the defendant must control the land from which the mischief has come. The defendant must have brought and accumulated something in the course of some non-natural use of the land. Third is the things accumulated must be likely to do damage if it escapes. Fourth is that the dangerous thing must escape, and fifth thing is that there must be damage because of the escape. उसके बाद आपने बताना है कि Ryland versus Fletcher was a strict liability tort. This means कि a defendant could be liable for damage even though they did not know that there was a risk of damage or could not have. उसके बाद आपने रेलेवेंट केस लॉज बताने हैं जो कि है ट्रांसको पीएलसी वर्सेस स्टॉकपोर्ट. आफ्टर दैट you have to further write के अंडर राइलैंड वर्सेस फ्लेचर आप किन किन को सू कर सकते हैं. उसके रेलेवेंट केसेस आप बताएंगे वेलर वर्सेस फुट एंड माउथ डिजीज रिसर्च इंस्टीट्यूट का. फिर आप केस बताएंगे रीड वर्सेस लाइंस का. फिर आप उसके बाद बताएंगे हेल वर्सेस जेनिंग्स ब्रोस का. and you are expected to know the facts because this is a past paper session. So I'm not going to teach the facts, I'm going to tell you how to attempt the paper. All right, उसके बाद आपने रीड वर्सेस लाइंस का केस बताना है, ब्रिटिश क्लीन्स वर्सेस हंट का केस. मैं आपको वो सारे केस बता रही हूँ जो कि आंसर के अंदर जो है वो आप लिख सकते हैं. अभी आपकी मर्जी है कि आपने कितने केसेस लिखने हैं टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट. उसके बाद आपने बताना है गिल्स वर्सेस वॉकर का केस बताना है कि जो लैंड से रिलेटेड है. जब आप अपना फर्स्ट एलिमेंट बताएंगे, फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट, तो फिर आप फर्स्ट लैंड वाली एलिमेंट को कि समथिंग ऑन टू द लैंड शुड बी ब्रॉट अप, तो उसके अंदर केस आपका आएगा गाइल्स वर्सेस वॉकर का. एंड देन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉन्टर डो आरडीसी वर्सेस मूर
का केस है वो आप इसके अंदर मेंशन करेंगे और आप बताएंगे कि कोर्ट्स हैव इंटरप्रेटेड नेचुरल टू मीन समथिंग ऑर्डिनरी एंड यूजुअल, सो नॉन नेचुरल यूज इज रिगार्डेड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज और एक्टिविटी। उसके बाद आप लॉर्ड केन्स की जजमेंट मेंशन कर सकते हैं राइलेंस वर्सेस फ्लेचर की, कि इट इज इंटरप्रेटेड और नॉन नेचुरल एज बीइंग समथिंग नॉट नेचुरली देयर, ठीक है। और उसके बाद आपने फर्दर ये बताना है कि दिस मीन्स दैट द रूल डज नॉट अप्लाई टू थिंग्स दैट आर नेचुरली फाउंड ऑन पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड। सो व्हाट इज रिगार्डेड टू नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड वो भी आपने सारा बता देना है। आफ्टर दैट you are going to be you're going to be mentioning further, yeah, so you will be mentioning further things such as ke रिकर्ड्स वर्सेस लोथाइन का केस है, राइट, और मसग्रोव वर्सेस पेंडेलिस का केस है जो इनको सपोर्ट करता है, और इसके अंदर ये रूल्स अप्लाई हुए थे, राइलेंस वर्सेस फ्लेचर का रूल इसके अंदर अप्लाई हुआ था। सो अब आपने बताना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल वाज इक्वेटेड विद एबनॉर्मल रिस्क एंड कोर्ट्स टुक इनटू अकाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड कंबस्टेबल मटेरियल, राइट, जो उसके अंदर यूज हुआ था नेबरहुड के अंदर। ये मैं केस बात किसके बारे में बात कर रही हूँ, रिकर्ड्स वर्सेस लॉचिन के बारे में, ठीक है। फिर आपने बताना है कि उसके बाद फर्दर इस केस की जो इंफॉर्मेशन थी और रूल था, दैट अप्रोच वाज आल्सो टेकन इन द केस ऑफ एलएमएस इंटरनेशनल वर्सेस स्टाइरीन पैकेजिंग एंड इंसुलेशन। आफ्टर दैट यू हैव टू further explain whether or not Rylands versus Fletcher is actually a tort of strict liability। उसके बाद आपने बताना है कि the meaning of strict liability जो है वो आपने फर्दर उसको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है कि strict liability का मतलब क्या होता है, right? So you guys should know the meaning of strict liability, as you people must have known it. Further you're going to mention, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं फिर भी बता देती हूँ कि strict liability जो है उसका मतलब ये है कि claimant need only to prove that the tort has occurred and the defendant was responsible, right? So in tort law, strict liability is the imposition of liability on a party without a finding of fault. Fault क्या हो सकता है, negligence हो सकती है, फिर उसके बाद tortious intent हो सकती है, और फिर आप बताएंगे कि the law imputes strict liability to situations it considers to be inherently dangerous, जिसके अंदर जो नॉन फॉल्टेड जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस होते हैं, और इसके अंदर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज अ स्टैंडर्ड ऑफ लायबिलिटी अंडर व्हिच अ पर्सन इज लीगली रिस्पांसिबल फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। So I'm explaining this, or you will not be able, you shouldn't be complaining कि आपके जो आंसर पॉइंट्स है उसके साथ ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिक्सअप हो जाती है। दैट इज अप टू यू टू सेपरेट इट एंड राइट इट, क्योंकि यू शुड आर एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यूअसली राइटिंग डाउन द पॉइंट्स। उसके बाद यू हैव फर्दर दैट इज के मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो आपने बताना है अच्छे तरीके से, एंड देन आफ्टर दिस you have to talk about the arguments कि whether it is a tort of strict liability, अपने proof करें, evidences दें जो examine करें Rylands versus Fletcher को, then you have to mention के आपने जो केस है वो डिस्कस करना है कि कैम्ब्रिज वाटर का केस था जिसने इंट्रोड्यूस किया था एलिमेंट ऑफ फोर्सिबिलिटी, foreseeability in the tort. So foreseeability क्या होती है? You must know it already. You are expected to know it before you come here. Foreseeability होती है कि आप किसी चीज को आपको नजर आ रहा हो
आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कॉन्सिक्वेंसेस को. इफ यू आर डूइंग समथिंग यू आर एक्सपेक्टेड टू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, तो दैट इज कॉल्ड foreseeability. एंड इन एडिशन टू दैट यू मस्ट बी आइडेंटिफाइंग द डिफेंसेस जो टोर्ट के अवेलेबल हैं. अगर आप रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के नीचे उसके अंदर अगर आप करते हैं सू करते हैं, तो यू ऑल्सो हैव टू मेंशन द डिफेंसेस. सो सबसे पहला डिफेंस जो आपके पास अवेलेबल है वो है कंसेंट, राइट. सेकंड इज, अब जो ये बता रही हूँ हैव टू फर्दर एक्सप्लेन इट कि यू हैव टू गिव द टाइप्स एंड के एक्सप्रेस कंसेंट होता है, इम्प्लाइड कंसेंट होता है, एंड कहाँ कहाँ कंसेंट अप्लाई करता है. आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन इन दिस केस पीटर्स वर्सेस प्रिंस ऑफ वेल्स का केस है जो आपकी इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करेगा. आफ्टर दैट सेकंड डिफेंस आपके पास जो अवेलेबल है वो है एक्ट ऑफ अ स्ट्रेंजर जो आपने मेंशन करना है. उसकी सपोर्ट में आपके पास केस आता है रिकर्ड्स वर्सेस लोथियन का केस, बॉक्स वर्सेस जब का केस. उसके बाद नेक्स्ट डिफेंस दैट इज अवेलेबल टू यू पीपल इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. इसके अंदर आपने जो केस एग्जांपल एक्सप्लेन करते हुए आपने मेंशन करनी है, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए, वो है ग्रीन वर्सेस चेल्सिया वाटर वर्क्स का केस. तो you are not expected to write the facts unless they are very necessary to support your argument. You just only have to mention the gist of the fact, or you have to basically mention the decisions or basic principle या test अगर कोई इसके अंदर रूल या establish हुआ है. उसके बाद आपने इसी को सपोर्ट, इसी डिफेंस को सपोर्ट करते हुए यू हैव टू मेंशन चेयरिंग क्रॉस इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्सेस हाइड्रोलिक पावर. उसके बाद आपके पास एक और डिफेंस जो है वो अवेलेबल है एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस. एक्ट ऑफ गॉड का फिर आपने बताना है कि कब कब यूज हो सकता है, राइट, किस वजह से आप एस्केप कर सकते हैं, और वो आपको पता नेचुरल, वो आपने पढ़ा ही है कि नेचुरल फोर्सेस और नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के आगे गार्ड करता है. और उसके अंदर आपने बतानी है जो आपका केस है टीनेंट वर्सेस अर्ल ऑफ ग्लासगो का केस है, उसके अंदर जो जज था उसने जो मेंशन किया था कि ह्यूमन फोरसाइट कैन प्रोवाइड अगेंस्ट एंड ऑफ विच ह्यूमन prudence is not bound to recognize the possibility. अगर आपने ये कोट करना है स्पेसिफिकली तो आपके वर्ड्स बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए कि जज ने कोटेशन कहा क्या थी. इफ यू डोंट नो, अनलेस यू डोंट नो इट, जस्ट डोंट मेंशन इट, क्योंकि इट विल कंट्रीब्यूट टू डाउन मार्किंग. उसके बाद आपके केस एग्जाम्पल एक्ट ऑफ गॉड के नीचे जो सपोर्ट करने के लिए आप मेंशन कर सकते हैं वो है कार स्टेयर्स वर्सेस टेलर का केस, निकोलस वर्सेस मार्सलैंड का केस, ग्रीन कॉक कॉर्पोरेशन वर्सेस कैलिडोनियन रेलवे कंपनी केस. आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन the other defense which is the default of the क्लेमेंट. अब आपको खुद भी पता, आपने पढ़ा हुआ भी है, यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड द सिलेबस, और आपको पता है कि डिफॉल्ट ऑफ द क्लेमेंट जो मैंने आपको बताया कि इसको क्वेश्चन के अंदर लिखना है, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि यू हैव टू इवेल्युएट इट रिलेटिंग टू रायलेंस वर्सेस फ्लेचर, और वो किस तरह मेंशन करना है, इसके एस्पेक्ट्स मेंशन करने हैं. और एस्पेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं. जब मैं कहती हूँ कि एस्पेक्ट्स यू हैव टू राइट इन योर आंसर, वो है एस्केप फ्रॉम लैंड, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन कि आपकी रिवीजन हो जाए, कॉम्प्लेक्सिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और साथ में आपने केस मेंशन करनी है डन वर्सेस बर्मिंघम कॉल. उसके बाद है पॉन्टिंग वर्सेस नोक्स का केस है, और उसके बाद you have to further explain them. After that you have to also mention the जो मैंने आपको बताया कि ranges of defenses आपने बताने हैं. उसके बाद आपने comment करना है कि क्या significance है रायलेंस वर्सेस फ्लेचर इस केस की, अवेलेबिलिटी बतानी है डिफेंसेस की कि कब कब अवेलेबल होंगे ये, और इस क्वेश्चन में आपने फर्दर यू हैव टू seek to reach coherent conclusion. Conclusion इसका जो होगा वो यही होगा कि रायलेंस versus Fletcher, yes, it is a strict liability tort as you have explained it before. Then you have to mention the facts that are in support of the argument, and then you have to tell कि whether or not you think कि it is Rylands versus Fletcher is a tort of strict liability or not.
and then you have to critically assess the whatever the answer you have written. एंड इफ यू डू नॉट असेस इट, के मतलब अगर आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करते या उसकी इन सपोर्ट आप उसको प्रेज नहीं करते, कि अगर आप कहते हैं कि यस डिफेंसेस दैट आर अवेलेबल आर एक्सक्विजिट एंड दे आर स्ट्रांगली इन सपोर्ट ऑफ द विक्टिम, तो दैट इज इनक्रेडिबल. आपका जो एग्जामिनर होगा, दैट एग्जामिनर विल ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूट टू your performance and he will give you higher marks. उसके बाद आप mention कर सकते हैं कि no defenses are not available and this rule is not like that, not much of the supporting rule, कि ये मदद नहीं करता किसी भी victim की, ये social justice की बजाय social injustice कर रहा है. ये आपके ऊपर depend करता है कि आप क्या सोचते हैं. So इसके अंदर there is no right and wrong answer. जो मैंने सारा आंसर बताया इसकी बेस पर आप explain कर सकते हैं सारा. The next is जो next है, अब हमने ये ऐसे question I have explained it to you. After that you are going to be mentioning the other case, जो other question जो के is a scenario based question. तो scenario based question में we're going to read the first one, कि Bill works in same office as Dave and they have regularly played practical jokes on each other. Means कि वो एक दूसरे पर prank करते रहते हैं. Before Bill arrives at work one morning, Dave loosens the screws on the Bill's office chair. When Bill sits on the chair, it collapses and he falls on the ground, injuring his shoulder. Dave starts laughing and Bill shouts at him, saying that if he were not injured, he would punch him. Their manager, Tom, hears the shouting. When he realizes that what has happened, he grabs Dave, pushes him into his office and tells him to stay there. And Tom closes the door but does not lock it. He tells Sam, another staff member, to stand outside the office and to stop Dave if he tries to leave. After 2 hours, Tom opens the office door and tells Dave to go home. Discuss the potential liability of the parties for trespass to person. So then you're going to further answer this question. What you are going to discuss in this question is you have to basically discuss the potential liability of the persons. अब आपने बताना है कि सबसे पहले it is the trespass to person, और आपने trespass to person का बताना है with the possible alternative claim in negligence. Negligence जो होगी that can be a defense. उसके बाद आप बता सकते हैं कि potential claims क्या हो सकते हैं. Assault हो सकती है, battery हो सकती है, false imprisonment हो सकती है, और उसके बाद आपने बताना है कि इनको भी further explain करना है कि assault के types होते हैं. Assault by beating जो होती है वो battery होती है. Assault बाकी जो होता है वो verbal होता है, such as threats, और psychiatric assault भी होता है जिसके अंदर you torture a person and you push that person into paranoia, something like that. उसके बाद आप बताते हैं बैटरी के उसके अंदर पंचेज आ सकते हैं, और फिर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जो है वो होती है, आपने फर्दर एक्सप्लेन करना है कि जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है वो होती है कि किसी भी इनवैलिड रीजन की वजह से यू डिटेन अ पर्सन एंड लॉक हिम इनटू सम प्रेमिसेस फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड विद नो रीजन. उसके ऊपर प्रॉपर केस हो सकता है. उसके बाद आप जो कि आपने बताना है कि इट इज फॉर द डिफेंडेंट, उसके अगेंस्ट. उसके बाद आपने लीगल रिक्वायरमेंट्स बतानी है ईच एक्शन की विद रेलेवेंट केस लॉ. तो अब जब आप बताएंगे लीगल उसकी, तो फिर आप ये बताएंगे कि जो बैटरी की डेफिनेशन है उसके एलिमेंट्स हैं वो आपने बताने हैं, राइट. And then you have to cite the case laws such as Lee Tang versus Cooper or Collins versus Wilcock
and then you can mention Fagan versus Metropolitan Police, जिसके अंदर जो पुलिस ऑफिसर था उसके पाँव के ऊपर डिफेंडेंट ने गाड़ी चढ़ा दी थी, जो कि उसने बैटरी के लिए किया था और इट वाज कन्विक्टेड कि ही कमिटेड बैटरी। उसके बाद आप लिविंगस्टोन वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, विलियम्स वर्सेस हम्फ्रे, स्कॉट वर्सेस शेफर्ड, डीपीपी वर्सेस के का केस इधर आएगा। उसके बाद आपने एलिमेंट्स ऑफ हॉस्टिलिटी बताने हैं, इंटेंशन बतानी है, और एलिमेंट्स ऑफ हॉस्टिलिटी में आपका विल्सन वर्सेस स्प्रिंगल का केस आ जाता है। फिर आपने कंडीशंस बतानी है लायबिलिटी की और डिफेंसेस बताने हैं, जो कि है कंसेंट, लॉ अथॉरिटी, नेसेसिटी, और डिफेंस ऑफ कंसेंट के अंदर आपके केस आते हैं नैश वर्सेस शीन का केस, आर वर्सेस विलियम्स का केस, आर वर्सेस बिलिंगशर्ट का केस, कॉन्डोन वर्सेस पैसी का केस। उसके बाद कंसेंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट आपने बताने हैं, उसके फर्दर एलिमेंट्स बताने हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड अगेंस्ट हिज और हर विल एंड दैट व्हाट यू हैव स्टडीड, एंड देन you have to mention here Chatron versus Jerson, Bridge versus University College London, and MSB versus NHS Hospital और REC का केस जिसके अंदर adult refusal of medical treatment was discussed। फिर आपने जब ये मेंशन करते हैं आपने बताना है कि these cases mention और prove के बैटरी का है और असॉल्ट का है कि उसने उसको थ्रेट किया है थ्रू पंच। उसने कहा कि इफ यू आर नॉट, तो उसके अंदर आपने फिर फर्दर डिस्कस कर देना है सीरियस ऑफेंसेस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है, राइट। आफ्टर दैट देयर इज द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, जो कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया है। उसके अंदर आपके फॉल्स इम्प्रिजनमेंट बताने हैं, एलिमेंट्स ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट बताने हैं, और इंटेंशन, और आपने कहना है यहाँ पे भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हुई थी जिसके रिलेशन में आर वर्सेस गवर्नर फॉर हर ऑफ हर मैजेस्टीज प्रिजन का केस आ जाता है, बर्ड वर्सेस जॉन्स का केस आ जाता है, टोटल रिस्ट्रेंट के अंदर, अनलॉफुल रिस्ट्रेंट के अंदर रॉबिन्सन वर्सेस बेलमैन फेरीज का केस आता है। इस तरीके से आपने रिलेट करना है टुवर्ड्स द सिचुएशन ऑफ डेव एंड दी बिल। उसके बाद आपने बताना है कि आपने जो जब लॉ बताना है ना, तो आपने उसके केस जो आपको ऊपर गिवन है उसके फैक्ट्स बताने, सिनेरियो जो है उसके फैक्ट से रिलेट करना है। और आपने बताना है कि इन रिलेशन टू द लूजनिंग ऑफ द स्क्रू ऑन द चेयर, आपने बताना है कि इट कॉन्स्टिट्यूट्स टू बैटरी, और आपने सारे एलिमेंट्स बताने के बाद उनको रिलेट करना है। एंड देन यू हैव टू फर्दर टेल के जो उसके एक्ट्स हैं whether or not they are sufficiently direct और intentional or not, क्योंकि वो डायरेक्ट भी थे और इंटेंशनल भी थे, राइट। और आपने ये फर्दर बताना है कि कौन से जो है आपने कंसिडर करनी है कि अल्टरनेटिव एक्शंस इन नेग्लिजेंस है या नहीं है। फिर आपने ये सारी उसकी लायबिलिटी एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद आप आ जाए बिल, कि बिल ने जब शाउट किया था डेव के ऊपर कि was, तो फिर आप सोचेंगे was there a possible assault but has it been negative by his words। तो अब आपने बताना है फर्दर कि जब टॉम ने ग्रैब किया था डेव को, there is another potential battery, कि although there may be possible defenses available here, जो मैंने आपको इन डिटेल बता दिए हैं वो मेंशन करनी है। उसके बाद आपने अगर आप रेलेवेंट डिफेंसेस को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको दुगना क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद आपने पॉसिबल फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का बताना है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर आपने बताना है कि इशू जो इधर मेन है वो ये है कि जो कंप्लेंट है, राइट, कि वेदर देयर इज अ कंप्लेंट रिस्ट्रेंट या फिर एंड ऑल्सो डेव्स नॉलेज ऑफ दिस है या नहीं है। तो विच वी नो कि डेव की एज सच कोई नॉलेज नहीं है, और अगर है तो यू हैव टू फर्दर एक्सप्लेन इट। देन यू ऑल्सो मस्ट एक्सप्लेन द लॉ, जो मैंने आपको बताया, पेस का बताया। उसके बाद आपने
जो है अगर आपने और फर्दर मार्क्स अचीव करने हैं तो आपको जो मैंने सारे लॉज बताए हैं उनको अप्लाई करने हैं इतने लॉजिकल फैशन में कि एग्जामिनर कन्विंस्ड हो जाए आपकी आर्गुमेंट को देख के, एंड यू हैव टू रीच अ कंक्लूजन जो कि ये है कि बैटरी भी हुई है, असॉल्ट भी हुआ है और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट भी हुआ है। ये आपका कंक्लूजन होगा और ये पोटेंशियल लायबिलिटी की आप बात बता देंगे और आप साफ साफ बताएंगे दिस वाज अ ट्रेसपास टू पर्सन, और मैंने आपको कोई केस नहीं छोड़ा जिसमें ना बताया हो कि जो आपने लिखना है जिसकी वजह से आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, एंड हाउ कैन यू सॉल्व इट। सो दिस इज द फाइनल डेमो कि आपने किस तरीके से एग्जाम में आंसर लिखने हैं, कैसे आपने उनको सॉल्व करना है, और मैंने आपको ये भी बता दिया क्या क्या लिखना है इसकी बेस पर यू कैन डिटरमिन व्हाट यू हैव टू राइट इन अदर केसेस एज वेल एंड हाउ यू हैव टू अप्लाई इट टू अदर क्वेश्चंस एज वेल। 1 hour has been completed and you always have to select one of the questions from this, और आपने वन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल टाइम आपका 1 hour 30 minutes है। सो बेसिकली आपने अपना 1 hour 30 minutes का टाइम जो है वो स्पेंड करना है बोथ ऑन द सिनेरियो क्वेश्चन एंड ऑन द अपर क्वेश्चन एज वेल। सो आप ये भी कर सकते हैं कि आप मतलब कि 45 मिनट्स करके आप डिवाइड कर सकते हैं अपना टाइम, और उस 45 मिनट्स के अंदर 45 + 45 में आपने ये दोनों क्वेश्चन करने होंगे। ऑल राइट,